Hello, 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 hello. चलो शुक्र अल्लाह का। गाइस आपको आवाज आ रही है? चेक 1 2 3। गाइस कैन यू हियर मी? हामिद फिजर क्या आपको आवाज आ रही है? ओके ओके थैंक गॉड। आई डोंट नो, आई थिंक स्ट्रीम का कोई इशू था या आई डोंट नो, मे बी सही कह रहे थे। हामिद दुश्मन ने बहुत कोशिश की और हम वापस आ गए हैं। होपफुली अब ब्रेक नहीं होता। अगर अब ब्रेक हुआ देन probably I'll have to end the stream and figure it out until the next time I can get live. So I hope you guys are doing fine. Sorry, I think हमारा आधा घंटा इसी में लग गया। मेरा 2:30 तक एक्चुअली टाइम ही था, but understandably let's stretch it till 3. So guys, the point is to hear you guys. I don't get time to type in inbox. I don't know if you'll trust me or not, but I have at least 15 to 20,000 inbox messages मैंने जवाब नहीं देना। So मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि मैं आप डायरेक्ट मुझे सवाल पूछूँ, मैं डायरेक्ट जवाब दूँ एंड डायरेक्ट मैं आपको हेल्प कर सकूँ इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। सो आस्क अवे जो भी आपको इश्यूज हैं, anything related to your career, your CV. So how to attract recruiters on LinkedIn? Is there, I think the question should be opposite. How to make recruiters attract you? And why do I say this? Because देखिए कंपनी जब हायरिंग कर रही होती है तो कंपनी भी चाहती है कि अच्छे कैंडिडेट्स अप्लाई करें। इट्स नॉट लाइक सिर्फ आपको ही इंटरेस्ट है कंपनी की जॉब में, कंपनी को भी अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए। बट चलें, इफ़ वी I get what you mean, but how do you make? I think the right question would be how to make recruiters look at your profile and reach out in case of positions. I think up to you the question. And only thing that I have to say is update your LinkedIn, be active on LinkedIn, connect with people. और people कौन? तो मैं पिछली वीडियो में ही बोल रहा था, recruiters, talent acquisition people, those people who control the hiring in a company. तो जो आप उनको करते हैं तो नेचुरली जब उनकी पोजीशंस ओपन होती हैं तो आप उनकी डेटाबेस में आते हैं। अच्छा, थर्डली अपनी जो प्रोफाइल है ना वो आप अपडेटेड करते हैं, व्हाटएवर स्किल्स यू हैव, योर एजुकेशन, योर सर्टिफिकेशन, योर स्किल्स, व्हाटएवर यू हैव, कीप इट अपडेटेड। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब रिक्रूटर एचआर लोग सर्च करते हैं ना तो दे सर्च विद कीवर्ड्स, सेल्स प्रोफेशनल, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स लेवल्स के हिसाब से भी सर्च करते हैं, कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, लेवल्स के हिसाब से भी सर्च करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है और कितना
किस हिसाब से उन्हें कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं. सो मेक श्योर दैट योर लिंक्डइन इज अपडेटेड. जो आपका लिंक्डइन अपडेट होता है जब सर्च करते हैं लोग, तो आप उसी हिसाब से लिंक्डइन उन्हें सजेस्ट करता रहता है कि यार look at this candidate, this best fits your profile. So Philip, this is the simple answer. Update your LinkedIn and connect with recruiters and talent acquisition people. आप जितना कर सकें. Okay, Hamid, I think अब मैंने mic बिल्कुल ही pass कर दिया, so I think it's quite audible now. Anything that you guys have to ask, Hamid, Mira? Thanks, Adnan. So, guys, again, those who have joined right now, the point is to connect with you directly, to answer your queries directly, so that you don't have to wait. To connect with you guys, this was Sunday को time निकाल रहा हूँ because when I did my poll, most of the people said yeah, Sunday is the right day to connect because everyone is free and everyone can take out time. So ask away anything that you have. Sir, how can you apply for a desired job? ये बहुत big question है. As in apply CV भेज के. As in, I don't know what. आप इसको थोड़ा फिर से rephrase करें. What exactly do you want to ask? Apply तो CV भेज के ही होता है. I think what you mean is how to get a desired job. For that, I can say देखें बहुत सारी चीज़ें हैं. Again, how you present yourself, how you give the interview. अब मैंने पिछला जो आप लाइव स्ट्रीम देखेंगे उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि इंटरव्यू कैसे देना है, how to conduct yourself in an interview. उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे. If you go on my channel, you'll see the best how to ensure that you get the right job. अब आप वो वीडियो देख लें. आई थिंक वो ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा आपके लिए. उससे मैंने डिटेल में पूरा समझाया हुआ है. अगर ऊपर ऊपर से चीज़ें यही हैं, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपकी सीवी कैसी है, हाउ यू स्पीक इन द इंटरव्यू, और आपने स्किल्स अपनी कैसे मैच की हुई हैं जो पोजीशन रिक्वायर्ड है. बहुत सारी दफ़ा ये होता है पोजीशन कुछ होती है, आपकी स्किल्स कुछ होती हैं, आप एक ही सीवी बना के हर जगह भेजे जा रहे हैं. हेड पर मैनेजर लेवल पे भी भेज रहे हैं, जूनियर लेवल पे भी भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी सीवी देखते ही इग्नोर हो जाएगी. Guys, at any point, if you think कि आवाज़ नहीं आ रही, just let me know. हामिद अब सही है? हमने दुश्मन को से पता कर लिया.
अच्छा, खिजर का सवाल है. I feel like most people are very confused at the start of their career. Same is the case with me. We're not sure where we want to spend our next 10 years. We've got a lot of fields to choose. बिल्कुल ठीक, वैलिड क्वेश्चन है. इधर मैं आपको एक चीज बताता हूँ. कभी ये मैं सोचिएगा कि यार एक ही चीज है जो मैंने पूरी जिंदगी करनी है. जॉब आप एक कर सकते हैं, इंटरेस्ट आपके डिफरेंट हो सकते हैं. मैं जॉब करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ये है टू हेल्प पीपल अराउंड, टू नेटवर्क विद पीपल. दोनों चीज़ें मैं अपनी कर रहा होता हूँ. बस मुझे टाइम निकालना पड़ता है. जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हैं. बट आई गेट योर पॉइंट कि मुझे एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट में जाना है. अगर मैं कंपनी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना करियर, सो व्हाट एग्जैक्टली इंटरेस्ट यू. अपने आप को सवाल पूछो. कंपनी के बारे में आप सोचते हैं, आप काम करते हैं. मुझे पता है मैं एचआर के अलावा तो किसी डिपार्टमेंट में नहीं कर सकता. बिकॉज आई लाइक टू हेल्प पीपल, आई लाइक टू इंटरेक्ट विद देम, I like to work on their career development, organization development. I know HR का impact क्या है कंपनीज के ऊपर. So मेरे लिए ये है. तो हर बंदे के लिए डिफरेंट. आपके लिए क्या है? क्या आप सेल्स ओरिएंटेड बंदे हैं? क्या आप कमर्शियल साइड पे हैं? क्या बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे हैं? सो वंस यू नो दैट, आपको ज़्यादा पता होगा कि करियर किस डिपार्टमेंट में मुझे जाना. एंड देखिए, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं. यू नेवर नो, यू स्टार्ट विद वन डिपार्टमेंट and you end up uh, you end up working somewhere else, which is fine. लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करें ना. कोई बेसिक इंटरेस्ट होता है, बेसिक नॉलेज होता है. मुझे नहीं पता आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या किया है. बट मोस्टली फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं उनका शौक होता है मशीनरी और प्लांट रिलेटेड और इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सिविल रिलेटेड. सो आप अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें करें. अगर मीडिया आपका इंटरेस्ट है तो मीडिया में करें. ये आप याद रखेंगे कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, इवेंचुअली इट पेज यू बैक. इवेंचुअली कुछ प्रोफेशंस पे बैक इंस्टेंटली, कुछ प्रोफेशंस पे बैक way later. There's some artists who spend a decade working on their art and their craft. तो उनको पैसे मिलना शुरू होते हैं 10 साल बाद. But eventually उनको पॉपुलैरिटी मिलती है. Yeah, I'm also sure. Great to see you. Sure, ask away. Ramesh Sheikh, I'm looking for the opportunity since more than 4 months. For more than 4 months, and given interviews as well. Could you please guide me how to prepare for the interviews here? I mean, at your just or not? Acha, Hamid as well. Could you please guide me how to prepare for the interviews here? I mean, at your just or not? Acha, Hamid, वो वीडियो वहाँ पड़ी है, उसमें आपको एग्जैक्ट पूरा चीज़ें बताई गई. मैं आपको डोंट थिंक कि मैं आपको बता रहा हूँ. मैं आपको सही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको वर्ड बाय वर्ड. वो आप स्क्रीन आगे पीछे करके सुन सकते हैं. बट मैं आपको अभी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जॉब सिर्फ इंटरव्यू से नहीं होती. आपने क्वेश्चन ये है कि मैं आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़. देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी बात है, देखते रहें. यही है लाइक जॉब सर्च का, यही है मार्केट, यही है. लेकिन उसको बेहतर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप किससे कनेक्टेड है, कि आपके नेटवर्क में कौन है, कौन आपको बता रहा है जॉब के बारे में. सो लिंक्डइन स्पेशली मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है. और मतलब हम कंपनीज में हम मोस्टली लिंक्डइन ही यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स सच अ बिग नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स. सो लिंक्डइन पे आप रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करें, टैलेंट एक्विजिशन वालों के साथ कनेक्ट करें, आप एचआर वालों के साथ कनेक्ट करें. एंड जस्ट कीप ऑन अ लुकआउट कि आपकी बॉल पे कभी अपडेट आ रही है कोई भी. ट्राई टू अटेंड इवेंट्स, नेटवर्किंग इवेंट्स, जहाँ आप एक से जाके मिल सकें. लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता उनसे आगे कोई मिले. हाँ, अगर आप किसी को बॉदर करेंगे तो आपको बोलेगा मैं तंग नहीं करूँ. बट other than that, if you approach someone for help, या तो वो पोलाइटली आपको रिफ्यूज कर देंगे या वो आपको कोई टाइम दे देंगे. सो ये है. बट इंटरव्यू, अगर आप स्पेसिफिकली इंटरव्यू के बारे में तो मेरा पिछला वो है, उस पर आप वीडियो पूरा वो देख सकते हैं. वेट. अच्छा, मौसम, आई एम फेसिंग a huge challenge in fitting my resume and two pages. Mausom, may I know that how many years of experience do you have?
बिकॉज कभी कभी होता है लाइक इट्स 10 years ऑफ एक्सपीरियंस और आपने इतनी कंपनी अगर चेंज की हुई हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ शो। बट लेट्स अज्यूम कि आपको 2 पेज, मतलब कंपनी अगर ज़्यादा भी हैं, वो स्टिल मैं तो सबको 1 पेज होता हूँ, पर हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन 2 पेज और मेरी खुद की 2 पेज पे यू कैन सो जो भी आपने फाइनल ड्राफ्ट अपना बनाया है 2 पेज वाला का, आई वुड स्टिल से कि उसमें यू कैन स्टिल कट लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना उसमें से जो आपने जो की अचीवमेंट्स लिखे हैं उसमें से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू शो टू द इंटरव्यू। सो फॉर एग्जांपल मैंने के इलेक्ट्रिक में एमपी में काम किया था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन डीएनओ। अब उसमें मैंने अपने 2 प्रोजेक्ट्स उठाए हुए हैं और 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई हैं एंड दैट्स अबाउट इट। इफ द इंटरव्यू गेट्स इनटू इट आई विल एक्सप्लेन। बट जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना कि फॉर एग्जांपल रैन द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव, hired 140 trainees, went to 20 universities, handled a budget of XYZ amount। ये मेरा टॉपिक खत्म। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट रोल में मैंने क्या किया, मैं इस तरह शॉर्टलिस्ट करता हूँ बिकॉज आई नो कि जो हमेशा इंटरव्यू जो सीवी देख रहा होता है उसका टाइम कम होता है और वो उसको कैची तभी होता है जब दैट पर्सन सीज डेटा and sees the impact that you've created in the company in a very certain, in a very precise way. So I would still say कि उसमें से भी आप कोशिश करेंगे आप क्या वर्ड्स अपने कम कर सकते हैं और क्या आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और उसको ड्रिल डाउन कर दें। क्योंकि देखिए हर चीज़ सीवी से, आई डोंट नो इफ यू टेकन इंटरव्यूज, बट इफ यू आस्क इंटरव्यूअर्स पूरी सीवी को गो थ्रू करते भी नहीं है, तो मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं और उसकी बेसिस पे बहुत सारी कंपनी में तो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। इट्स नॉट इवन लाइक कि आपकी सीवी से एक एक चीज़ उठा के पूछ रहे हो यार ये क्या है ये क्या है। Yeah, so that's a lot of companies. I think one, two, three, four, five, six, seven companies. Yeah, again, I would still say the same thing. So I'm assuming 7 companies in 8+ years. So that means probably 1 year, on average 1.5 year per company. अब 1.5 year में आपने कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए होंगे, और अगर आपने इससे ज़्यादा कर भी लिए हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट करने में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और उसकी वैल्यूएशन में साल तो ऐसे ही निकल जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स। बट आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो आप कहते हैं कि यार मुझे दिखाने हैं, वो आप दिखाएं। अब मैंने काम बहुत सारे किए हैं इन एंग्रो, बट मैं सारी चीज़ें नहीं लिख पाती थी बिकॉज आई डोंट वांट to have a discussion on that. It's not a big thing. I haven't created an impact. अच्छा, दूसरी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सीवी ऑल्टर होती है हर जगह के लिए। So let's say you're applying for your marketing right now, for example, and you're applying for uh, brand manager role, and you currently you're working as a PR consultant in some company। आपकी सीवी पूरी चेंज हो जाएगी बिकॉज आप अपना वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस पे ज़्यादा एम्फोसिस डालोगे। सो लेट्स से इफ यू वर्क इन सम कंपनीज, जिन 2 कंपनी में अपने ब्रांड मैनेजमेंट का काम ज़्यादा किया है ना, तो कभी आप पीआर में ब्रांड मैनेजमेंट काम किया, ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस डालोगे, बाकी पीआर वाले को शॉर्ट करके चेंज होगी सीवी। सो लेट्स से अगर मैं अभी टैलेंट ट्रेनिंग एंड ओडी में हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ एचआर ऑपरेशंस मैनेजर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कोशिश करूँगा मेरा ट्रेनिंग एंड ओटी का एक्सपीरियंस कम, मैं की अचीवमेंट्स दिखाऊँ और मेरा जो ऑपरेशंस का रहा है ना, मैं उस पर हाईलाइट करूँ। आई थिंक दैट्स योर बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको आप ज़्यादा कर दो, जो आपका कम एक्सपीरियंस है उसको कम कर दो। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि सीवी पूरा कोई भी नहीं पढ़ता। अच्छी कंपनीज होती है ना, वो तो ज़्यादातर बिहेवियरल क्वेश्चंस करती हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस में ही आपके प्रोजेक्ट्स निकल के आ जाते हैं। बट येस, शुरुआत तो सीवी से ही होती है, तो मैंने गो थ्रू है। सो नेचुरली जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करने हैं, तो इफ आप खुद सोचे ना, इफ you're checking out someone's CV and you're hiring for as a brand for a brand manager, then naturally your eyes will be on there. Okay, where is the brand management experience? How can this person add value to my company? So आप भी यही करें। This is what I'll do. This is what I do, and this is what I've seen people doing. So that मैं आपको नई चीज़ बता सकता हूँ। Let me know if this works because 2 पेज से ज़्यादा किसी भी is
unless you have like amazing achievements which are which involves a turnaround in the company, which involves projects which the company, like with big shifts. Then otherwise, it's I don't think 2 pages ज़्यादा होनी चाहिए. Engineer Adil Akram, greetings, my bro. First of all, I want to appreciate you creating your learning circle open for others. Yes, thank you so much. I want to know the hiring process that you're in for graduate trainees. Adil, हायरिंग प्रोसेस देखें. पहले हो जाता ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. Engro stopped doing it because of different reasons, but hiring is still going on. इसकी जो हायरिंग है, अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन. आप इसकी हायरिंग होती है, जो भी वैकेंसीज होती हैं वो लिंक्डइन में पोस्ट हो जाती हैं. लिंक्डइन में पोस्ट नहीं होती तो कहीं ना कहीं से आपको वो वैकेंसीज शेयर होते होते पहुंच जाती हैं. बट द मेन एरिया इज लिंक्डइन. एंड सेकंड इज, जो आप लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स और टैलेंट एक्विजिशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो अपडेट करते रहे अपनी प्रोफाइल कि वी नीड प्रोफाइल्स फॉर दीज ट्रेनिंग. एंड थिर्डली, आपके करियर सर्विस ऑफिस जिस भी आप यूनिवर्सिटी से हैं, अगर एंग्रो वहाँ जाता है स्टूडेंट्स लेना, तो उनसे आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि दे वंस वी अप्रोच देम कि अच्छा हमें कुछ प्रोफाइल्स चाहिए, देन दे शेयर इट इन देयर ओन यूनिवर्सिटी. आई थिंक कैंपस मेल होता है जो भी होता है. सो एज सिंपल एज दैट. Secondly, why your company always prefer UET and NUS graduates? There should be criteria given for every so that you can shortlist them on their performance. देखिए अदील, आपकी बात ठीक है, लेकिन एंग्रो में बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हैं. लाइक मेहरान यूनिवर्सिटी के बहुत ग्रेजुएट्स हैं, नवाबशाह यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, घर के बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के आए हैं घर से और जो जॉब कर रहे हैं. बट यस, जब मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं, अब पाकिस्तान में अगर 100 यूनिवर्सिटी आप नहीं जा सकते ना. आप एज एन एचआर या एज ए सीईओ होते हैं किसी कंपनी के, देन यू स्टार्ट शॉर्ट लिस्टिंग. जब आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कहाँ पे बेंचमार्क और कहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर ग्रेड्स, सबसे बेहतर कैलिबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें हिस्टोरिकली मिले हैं. तो आप अपना बेसिकली आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं, यू पुटिंग योर बेस्ट बेट. यार मेरे हिसाब से मैं इधर जाऊँगा और यहाँ से स्टूडेंट्स लाऊंगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व. सो तब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे आप फिर रैंकिंग देखते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी किधर रैंकिंग में आती है, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी चले जाते हैं. सो इफ यू टेल मी कि लम्स आईबीए मतलब क्यों जाते हैं, so that's one of the reasons कि उनकी रैंकिंग and the criteria for entering their students and historically how their graduates have performed in Anglo, that plays a big role. बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी के हो तो आप कभी इंग्रो नहीं आ सकते. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जिनमें कैंपस ड्राइव नहीं होते. अदनान रसूल, सर कैन यू प्लीज शेयर रेज्यूमे फॉर्मेट्स? या मैंने रेज्यूमे के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाई थी. अगेन वो यूट्यूब के आप चैनल पे जाएंगे, सीवी राइटिंग टिप्स हैं. बट अगेन मैं लिख लेता हूँ. मेरे रिज्यूमे का जो भी फॉर्मेट होगा जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं तो बहुत सिंपल फॉर्मेट रखता हूँ. मैं बिलीव नहीं करता इतना कलरफुल करने में, और मतलब मे बी इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट फॉर सम पीपल. मेरे लिए सीवी इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन टूल. सो इफ आई गेट अ सीवी आई वुड फोकस ऑन द की अचीवमेंट्स ऑफ द पर्सन एंड इफ द रोल इज रेलेवेंट और नॉट. मैं पर्सनली इतना वो नहीं देखता, मतलब सिंपल फॉर्मेट उसके ऊपर. लोग कलरफुल बनाते हैं, लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करते हैं, बट आई विल शेयर जो भी मेरे पास हो. Also, you're doing a great job. I'm glad to see that you're going out of the way for your passion. May you achieve your desired goal. Thank you, yaar. Thank you so much. I'm trying my best with my limited resources. But it's good to have such feedback. मुझे encouragement मिलती है और करने की. Sure, let me know how, like if you're able to fit it, and अगर नहीं होता तो फिर let's see what we can do.
Also, for those who are connected, I have the list of job vacancies जो मेरे पास forward होते होते आई हैं. तो मैंने एक word document बनाया. After this stream, I'll send it to the people who signed up for my learning club. मेरे पास email address है. मैं उनको direct भेज दूँ वो document. That has a lot of vacancies the market में है अभी. Please share the link of the group page at which you used to share vacancies. यार मैंने बेसिकली एक लर्निंग क्लब बनाया था. द आइडिया वाज टू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जिनसे मेरी भी लर्निंग हो, दैट आई कैन डिस्कस शेयर आइडियाज. तो मैं उनको भेजता हूँ ये चीज़ें. द प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत सारे लोग आ गए. तो मेरे लिए लाइक आई वांटेड टू कीप इट डिफरेंट फ्रॉम लिंक्डइन. बट आई स्टिल शेयर द लिंक. उसमें कुछ लोगों ने जॉब अपडेट सब किया. आई स्टिल सी अगर कोई जगह बनी है डेफिनेटली कुछ भी. सो आप मेरी अपडेट्स वगैरह वो सब आपके पास आ चुकी हैं. Mozam, WhatsApp group, the issue, I have numbers of everyone who has joined, who has applied for, not applied actually, who has shown interest in joining the learning club. But the issue is इतने सारे WhatsApp group हैं, so I just feel कि ऐसा ना हो. Like I really need to be sure कि हम कौन उसमें हैं जो कि actually value add कर रहे हैं, जो spam नहीं कर रहा. I hope you get my point. So there are a lot, I'm sure कोई WhatsApp group से आप part होंगे. So मैं बहुत सारे HR groups का part हूँ. अब उसमें फिजूल चीज़ें आ रही होती हैं. कोई वेदर अपडेट्स, हालात अपडेट्स. एक वो वाला मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रोफेशनल जोन जो एक्चुअली इन फ्यूचर मिल भी सकें और डिस्कस कर सकें और एक्चुअली वैल्यू ऐड करें. सो अभी मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे लोगों से इंटरेक्ट करके जो जो है जो मुझे लग रहा है कि यार अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो उनको मैं एक ग्रुप बना लूँगा उनका. लेकिन सबका बनाना है. मे बी आई सी. अगर मैं देखता नंबर्स हैं मेरे पास. Ahmed Sheikh, is it necessary to have MBA degree? Because I've heard from one of the CEOs in Turkey company going into a master's degree and some children there's no money to go. यार देखें बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. बट आप MBA से क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपको पहले ये देखना है. MBA, what is the purpose of MBA? MBA gives you exposure by case studies, gives you exposure to more exposure to the corporate world theoretically, by reading case studies, by working on them, by linking with other colleagues, by networking. ये आपको देता है. But there are a lot of people जिन्होंने बैचलर्स के बाद ज्वाइन किया था कंपनी और सर्टिफिकेशन अपनी स्किल बढ़ाए जा रहे हैं. तो MBA की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बस लाइफ सेट हो जाएगी या मेरी प्रमोशन हो जाएगी. बट MBA की वजह से ऑब्वियसली आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत है. सो यस, अगर आपने सर्टिफिकेशन की हैं, आपने लर्निंग आपकी कंटिन्यूड है, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या दूसरी ट्रेनिंग और ये ले रहे हैं जिससे आपकी स्किल बढ़ रही है. सो MBA आप ये नहीं कह सकते MBA मैंडेटरी है, इसके बगैर मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी. मेरे
So through this YouTube live, I'm thinking in a uh, job vacancies and that I should also, for example, a bit on top of my head, there was an executive secretary position for a CXO level at K Electric. If anyone wants to apply, there's an officer in product development and agribusiness department in PMEX. If anyone wants to apply, KSB Security is looking to expand its research team and is looking for an analyst to join the team. Talent acquisition recruitment executive, people required for a US based IT company in Karachi. So yeah, I'm thinking, I don't know, you guys could give me an idea. HR manager, young HR managers are required in Engro, got who enjoy analytics and data driven decision making. Regional sales manager required in Karachi with B2B experience. Yeah,